hearts. We pray, Father, spread like a wildfire, oh Father, Lord. Touch each and every soul of those who hear this, Lord, today's message, oh Father God. Thank you, Jesus. We thank and we praise you, Father, Lord. You be the beginning and the end, oh Master, Lord. We give you all the glory and honor, Lord. In Jesus' name we pray, Father God. Amen. Amen. No voice, brother. Hello. It's now clear. Sorry. Now we will invite Brother Daniel to lead us in a worship. We welcome you, brother, in the name of Jesus. Yeah, you are you can unmute yourself. You are a co-host. Thank you so much. Thank you so much, brother. And so before we go into a time of worship, I just want to pick up a scripture that was I got as a promise before the year began, and it was Isaiah 38 verse 17. And for me personally, it was I was going through a rough phase mentally and spiritually, and I was not at peace. And the entire year 2020 was, I think, a tough year for all of us collectively because of COVID and things like that. But apart from that, I think we faced many other issues, and it was the same for me. I was facing many other issues, and at that time when I felt so down and I felt so disturbed spiritually and mentally, I was in another city for New Year's to be a part of their worship team, and that time I got a promise for me from it was from Isaiah 38 verse 17. If you have your Bibles, you can follow with me, and it says, "Indeed, it was for my own peace that I had great bitterness, but you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption, for you have cast all my sins behind your back." And for me personally, it was such I feel, such a relieving thing that I got a promise from God saying, whatever you went through, whatever happened in 2020, whatever situations you were put to in the year, it is all happening for your benefit. So I think for all of us here on Zoom or on Facebook who is listening, let's just take that as a reminder from God, saying that whatever I put you through in 2020 or maybe in the coming year, it is for your own good. And through it all, we should be able to just give thanks to God and say, God, I know that you are in control. So as we go into a time of worship, let's just surrender ourselves and say, Lord, over whatever happens in our life, we know that it is for our own good, and we know that you are in control. Oh, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी
प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ यीशुआ, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे। हो यीशुआ, तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Oh, let's lift our voices and sing, Amen. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशुआ आपके सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा। यीशु यीशु तू ही तो है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही तो है, तेरे बिना कोई नहीं। तू ही आरज़ू मेरी चाहत, तू मेरा हौसला मेरा प्रभु। तू ही आरज़ू मेरी चाहत, तू मेरा हौसला मेरा प्रभु। अब हम सब गाए, तू ही आरज़ू मेरी चाहत, तू मेरा हौसला मेरा प्रभु। तू ही आरज़ू, तू ही आरज़ू मेरी चाहत, तू मेरा हौसला मेरा प्रभु। यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा आपके चरणों में मैं कहता हूँ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, ओ यीशुआ सजदा करूं,
सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही तो है, तेरे बिना कोई नहीं। Let's all sing it. यीशु तू ही तो है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं यीशुआ। Oh, there is no one like you, no one else like you. Your name is above every other name, above every other God, above every other disease. Your name, oh, your name is above every name. Your name is above every God. Your name, there is no one like you. Oh yes, Lord. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। ओ यीशुआ अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा As we're singing the song, let's just remember God for all the good things that He's done and say, Yeshua, tere jaisa koi nahi. Even though the year 2020 might have been a hard year, and even though we might all be going through so much of difficulties, let's just say, oh Lord Father, today I don't care about anything else and I only care about you. And let's lift our voices and sing, oh Lord Yeshu, tere jaisa koi nahi Yeshua. Tum sa koi nahi Yeshua. And as we keep on singing this and as we keep on declaring in this life, we are bound to see some change. And so as we sing the next chorus, let's just all, wherever we are sitting, in whichever part of the country we are, let's just lift our voices and say, oh Lord Father, there is no one like you. Tum sa koi nahi, tum sa koi nahi. Ab hai pura yakin, tum sa koi
as we sing the next song, let's just all just begin to say, oh Lord Father, you are my rock, oh Lord Father. Oh Lord Father, there is no one like you. That whatever situation, oh Lord Father, in my life, whatever, oh Lord Father, thing I'm facing in my life, I know I can trust in you, oh Lord Father, because you are my rock. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, या तू मेरी ताकत है, तू मेरी ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू ही कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना
Yeshua, 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 तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, Yeshua, Yeshua, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, Yeshua, Yeshua, oh Yeshua. थैंक यू सो मच ब्रदर डैनियल। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इतनी सुंदर वर्शिप के लिए, और परमेश्वर ने इस आराधना से मुझे विश्वास है कि जितने लोग बैठे हैं उनसे बातें किया है और उनके मनों को तैयार किया है कि आने वाला जो वचन है वो बहुतायत से उनके जीवन में काम करे। तो इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस कोठारे जो मेरी बुआ हैं उनसे कि वो प्रार्थना में एक अगुवाई करेंगे कि आने वाला वचन, और जो हमारी प्राचारिका हैं जो सिस्टर एंथोनी जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, सारी बातों के लिए वो प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। आवाज आप कर सकते हैं प्रेयर। हेलो। हाँ आवाज आ रही मुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, महिमा में परमेश्वर। हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आते हैं, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके सामने हरेक पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे स्वर्ग सब वस्तुएं जो है वो घुटना टेकेंगी प्रभु जी। हरेक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है प्रभु, और उसी नाम में तेरे पास आते। धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो तूने अनुग्रह किया ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके प्रभु। तेरे दासी को लेके आए, इसके लिए हम धन्यवाद देते। सच में प्रभु हम तेरे बातों को सुनना चाहते हैं, और ना केवल सुनना परंतु उसके अनुसार चलने चाहते हैं प्रभु। इसलिए हमारे हृदयों को खोल पूरी तरह से प्रभु जी, वो प्रभु जी, ताकि हम पूरा समझ के और उसके अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु जी, और सहायता करता कि हम सच में प्रभु तेरे लिए फल लाने वाले बन सके, और इन दिनों में बहुत आज तेरे नजदीकी में अपना जीवन व्यतीत कर सके, और तुझे हम पहचानने वाले बन सके, और प्रार्थना करने वाले बने प्रभु। ऐसा हम तुझसे चाहते हैं, खास करके दासी को तेरे कदम रखते खुदा। हालेलुया, उनके द्वारा तू बोल, अपनी आत्मा से भर के जो तू बोलना चाहता हमसे बोल प्रभु जी, और भी सामर्थ सहित प्रभु जी, ओ प्रभु इसको उपयोग कर प्रभु, वो शैतान के काम नष्ट होए प्रभु जी, हर एक मन पूरी तरह से तेरी ओर लग सके, ऐसा वचन उनके द्वारा तो बोल प्रभु जी। हम सबों की सहायता कर प्रभु, इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। Thank you so much. Now this is time to invite Sister Anthony to lead us in a word of God. Sister, please, ना times मैं आपको देता हूँ ये समय कि आप lead करें। It's wonderful to come together in the name of our Lord Jesus Christ. It's such a great privilege
every time when someone invites me to share God's word, I consider it is a great privilege. Whether it's a small meeting or big meeting, I will not like to miss that. And actually, past 1 month, I was very, very sick. I was in Bangalore when I had received the message from Brother Bhima. So I didn't even know if I was going to come back to my home in a week's time, that I will be able to share. But thank God that I'm still recovering, but I'm able to speak, and God has touched me and healed me. And I also thank God for this wonderful opportunity, and also Pastor Sandeep. We have not met physically, but we have spoken over the phone and then through the messages. And thank you so much, Pastor, and your congregation. This evening, I consider this as a privilege. And like my son was leading the worship, and he was telling, we had a very rough year, 2020. But even in the end of the year, for me and for my son, it was not easy time. It was a very challenging time. But the Lord is on the throne, and He is always on the throne, and He will lead us and guide us, and He will always take us higher and higher. And that's what he was reading from book of Isaiah. Whatever we go through is a time of valley situation, but God will make it as a benefit for our own life. Like I have been in the ministry almost 26 years. When I was 20, I got married, and I have two wonderful sons. And my husband is a senior pastor, and I'm a co-pastor of the church that we are in Karnataka, Hubli. But in this 26 years of journey with the Lord, we have seen many highs and downs. I know we were having very wonderful time and also very, very unexpected time, which we thought, wow, this is end of time. But the Lord is been wonderful. I think you all have gone through so much of challenging situation in over the years in your life walk with the Lord. But only because the Lord is with us, we are so privileged and wonderful people of God that no matter what comes on our way, we are the victorious people. Amen. Hallelujah. So we are the victorious people. You are victorious people because of our Lord Jesus Christ who is on the throne. Today, I'm going to speak from book of Esther. This is one of my favorite book from the Bible. I think to many of you. For me, for a special reason, because Esther was an orphan girl. Everybody knows that. And when I was growing up, I grew up as an orphan child. I had no clue my life would be like this one day. I always thought I need to kill myself, and I tried to commit suicide before I reached 15 years. In the age 15, somebody gave me a Bible. I have a long story, but I'm making it very, very short because of the time. But when they gave me a Bible, they didn't have time to explain to me, but they said, read this book, it will change your life. And I was very curious what this book can change my life. You know, I turned around the book, and then I thought, there are many books in the world. What this book, which has a black sheet on the top of it, would change me. Because I was so desperate. I tried to kill myself 3 times. I didn't die. And I was in depression. I had no clue what to expect for my life. And that was when somebody gives me a Bible and then tells me, your life will never be the same again if you read. And the day the Lord speaks to you, your life will be changed. It was very, very strange. And I was very curious. During that time, all my life, till I met the Lord, till the Lord took me away from that village, all my life, I grew up in villages. I used to walk from one village to another village for my school. There are many times I didn't go to school. And as I was growing up as a child, I always had a desire. I need to learn in English, and I should be up somewhere there, you know. This was my desire. But I didn't know how that would be possible. But the houses that I was growing up, there were people from different main big cities would come, and they would always speak in English, and the English would, you know, catch my attention, and I would be
so fascinated about this language, and then I wanted to speak in English. But I thought that would never be possible because I was born in a Hindu family, thrown away by them when I was born and adopted by somebody. But because my adopted mother was a very old lady when she adopted me, she fell ill and she couldn't take care of me. And I was raised up in many different houses of our own children, but they didn't have this heart to raise me up. So I was abused physically and harassed mentally. And, many different things were happening in my childhood. And I had no reason why should I be alive. But when I began to read the Bible, one particular day, my life changed. That day, I remembered my own mother, and I thought I need to, I just remembered her every day. But that one particular day, the house that I was living in that village, they had a dhaba kind of hotel beside the road. And in that house, there were 30 people. I have to work for 30 people. I have to work for their hotel. And I also have to go to school. My school bus from that village when I was in high school would come morning 6 o'clock. So before that, I had to finish many different works for the hotel. I have to prepare. So if I miss that bus in the morning 6 o'clock, then I don't go to school that day. That was my situation. So this went on for years like that. And during that time, they gave me a Bible. I was reading one night. Every morning, I woke up at 4 o'clock in the morning. Every night I went to sleep. It used to be 12:30, 1 o'clock. This went on for years. So because they told me, if you don't read the Bible, your life cannot be changed. I was very curious because I was desperate. So even though I didn't understand, I was so sleepy and tired every night when I went to bed, I still used to open the Bible and ask the Lord, I don't know why I'm reading, but whoever it is in the Bible, speak to me. This did not happen immediately when I opened the Bible, but after so many days, one particular day when I was reading from Isaiah chapter 49, 15 and 16, it says, your own mother might forget you, but I will not forget you. I've engraved you in my palm. You are always there before me. I will not forsake you. That really struck me because that day I was remembering my mother and I just wanted to be with her and I wanted to hug her and I just wanted to cry over her lap. But that day, when I opened the Bible, I was crying and I began to wonder. Every day I read, I don't understand, but today, why am I crying? So I begin to wipe my tears and try to understand what is in the Bible. So during that time, the Lord spoke to my heart. Even your own mother will not forget you, but yet she might forget you, but I will not forget you. I've engraved you in my palm. You're always there before me. I had many questions. I got so angry with the Lord. I said, am I always there before you? Am I always visible to you? Did you see me how many times I tried to kill myself? Are you aware of how harmful my situations were? My life was not safe, but the Lord always protected me till that day until today. But my life was always in danger situation in the houses that I was growing up. But the Lord protected me. The Lord preserved me because in the Psalms it says, the Lord preserves his anointed. I didn't understand till then. There was so many possible situations. Somebody would attack me and destroy my life. But the Lord preserved me and protected me, which I'm very, very grateful. It was very easy for people to attack me and destroy my life. But the Lord who watches over us, he will protect us and preserve us, and he will take care of our life because that is what he says in the Bible. And that night, I didn't understand much, but I knew the God of the Bible spoke to me. And I knelt down and I told the Lord, I don't know who you are, but I know you are my father and my mother. I'm not going to kill my life. I give my life to you. And that day, there was a kind of peace and a hope that completely surrounded my mind and my heart. There was no fear. There was kind of divine faith came into my heart. And I told myself, I'm not going to kill you.
you are going to leave. That is for the God of this Bible. So I gave my life that night. My life did not change immediately. I was 15 and my life continued with same difficulties. I have to work in the house for 30 people, work in the hotel for them, and I have to go to school. If I miss it. But I was always very much fearful about my future. What would happen, because I'm not an educated woman. I'm not going to be, educated very well. What will happen to my future? I always wanted to be a lawyer. I wanted to be very educated person, but that did not happen. Somehow by God's grace, I could manage to finish my education till +2 in my native language, Kannada medium. I always wanted to learn English. I wanted to always go upper in life, but that did not happen. And that was the time I began to read the Bible every day, every day, every day. When I was 17 years, the Lord spoke to me so directly when I was reading the Bible, just like he spoke to Peter. Peter said to Jesus, I left everything, I follow you. And Jesus immediately looked at him and said, nobody would go in loss when they left everything and follow me. If for my sake, if you leave your father, mother, brothers and sister, and everything that you have, you will gain much more than that, more than 100%, and also eternal life, and also difficulties. God is a wonderful God, and he spoke to me, follow me, I will use you over the nations of the world. I didn't understand. I said, God, I don't know English. I don't know many things. I don't know anybody in the world. All my life, I'm in village. All my life, I grew up in village. Now, where are you going to take me? The Lord said, leave this village. I don't know where to go, but the Lord says, leave this village. I will take care of you. In the age of 18, I left my village. I landed up in Hubli. I told you I don't have so much time to explain and go into details. So I came to Hubli, where I'm living now. And then I went to a church. I shared my testimony. Before I went to a youth camp, meanwhile, to another city from my church. They pushed me on the stage and asked me to share my testimony. There were about 1,000 people. I never stood before people. I was, by nature, I'm very, very shy and timid person. When they pushed me on the stage before thousands of people, I don't know what to say. I said, I don't know what to say. They said, close your eyes and speak how you believe in Jesus. That's what I did. Maybe I took an hour of time. By the time I finished, the whole crowd was crying. And I came back to my town, and my pastor called me and asked me, did you share your testimony? I said, yes. And then my pastor told me, there was a man, young man, God spoke to him for you to be married. I said, I didn't come to this city to be married. I have come to seek the Lord and serve the Lord, and I've come chasing the Lord. And they said, take your time and pray about it. There were about many guys who came and approached, but I have no clue what was happening. I took time to pray about 15 days and fasted and prayed. I know the Lord was in here. Sister, sorry to interrupt you. Yeah. Actually, we have a translator. She will translate for you. Okay. Yeah. Just wait a minute. Yeah, Esther, you can. Yeah. Yes, Hello, sister. sister. Praise the Lord. Sorry, actually, we have people who will find it a little difficult Okay. going all through in English. So I So just I don't have to go back, right? I can No. continue from here. No. I think we can continue from wherever you are. Okay, thank you. So that's when I was 20, I got married. और जब सिस्टर 20 साल की थी तो इनकी शादी हुई. So my life began from there. और इनका जीवन उस समय से शुरुआत हुआ. In the ministry. और परमेश्वर की सेवकाई में. And when I was 20, I was a pastor's wife. और मैं 20 साल की उम्र में एक पासबान की पत्नी बन गई. But I was thinking I'm happy to be a pastor's wife. और मैं ये सोच कर खुश थी कि मैं एक पास्टर की पत्नी हूँ.
But the Lord was kept telling me, you are not just a pastor's wife. परंतु परमेश्वर मुझे बोलता गया कि तू सिर्फ एक पास्टर की पत्नी नहीं है, I will use you over the nations. और मैं राष्ट्रों में तुझे इस्तेमाल करूंगा. I couldn't believe. और मैं ये विश्वास नहीं कर सकती थी. And I began to pray and do whatever I needed to do with my husband in the church. और मैं प्रार्थना करने लगी और चर्च में जो कुछ काम था मैं पास्टर के साथ करती थी. But the Lord spoke to me, I want you to take care of the orphan children. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू अनाथ बच्चों का केयर करे. I said, Lord, we do not have food to eat. How will I take care of the orphan children? और मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर हमारे पास खाना नहीं है, मैं अनाथ बच्चों को कैसे खिलाऊंगी. But the Lord was kept speaking to me the same thing, that you are going to take care of many orphan children. लेकिन परमेश्वर मुझे बार बार ये कहता गया कि तू बहुत अनाथ बच्चों की सहायता करेगी. Because I received the love of God. क्योंकि मैंने परमेश्वर का प्रेम पाया. I believed in Jesus. मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया. And that is when I know I am not an orphan. और तब मुझे पता चला कि मैं अनाथ नहीं हूँ. I am the child of the Most High God. और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बेटी हूँ. And the Lord takes care of my life. और परमेश्वर मेरी चिंता करता है. And it has been 26 years I am married. और अब मेरी शादी को हुए 26 साल हो गए हैं. I have traveled over about 8 to 9 countries. और मैंने करीब 8 से 9 देशों में यात्रा की है. And I have traveled also many places in India. और मैं भारतवर्ष में भी कई जगहों पर यात्रा करती हूँ. Why I am saying all this? और मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? Because when the Lord speaks to our life, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बात करता है, our situation will not agree to the things that God speaks to us. और हमारी परिस्थितियां परमेश्वर जो बोलता है उससे बहुत विपरीत हो सकती है. But when we believe what the Lord says, पर परमेश्वर जो कुछ बोलता हम जब उस पर विश्वास करते हैं, the Lord is very excited. और परमेश्वर एक्साइटेड हो जाता है. Because the Lord wants us, His children, just to trust in what He says to us. क्योंकि परमेश्वर सिर्फ यह चाहता है कि हम उसके बच्चे वो जो कहता है उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें. In the book of Esther, और एस्थर की पुस्तक में, you know, Esther was an orphan girl. और एस्थर भी एक अनाथ बच्ची थी. And God had a plan for her life. लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी उसके जीवन के लिए. And she becomes all of a sudden one fine day a queen. और एक दिन अचानक वो एक रानी बन गई. By the help of her own uncle. और उसके अंकल के मदद के द्वारा. And I want to tell you in the book of Esther. और एस्थर की पुस्तक में there are 4 different characters. 4 विभिन्न पात्र हैं. The king, her husband, Esther's husband, Xerxes. राजा जो एस्थर का पति जो है शय्यर्ष राजा. And there is Mordecai. और मोर्दकाई उसका चाचा. And Esther. और एस्थर. And Haman. और हामान. There are 4 interesting different characters in the book of Esther. और एस्थर की पुस्तक में ये 4 इंटरेस्टिंग पात्र हैं, विभिन्न पात्र हैं. In this book, I want you to open your mind and understand something. और मैं चाहती हूँ कि आप अपने मनों को खोलें और ये समझें. In the king, I want to compare him to God Almighty. जो राजा शय्यर्ष है, मैं उसकी परमेश्वर से कंपैरिजन तुलना करना मांगती. The Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ. And the second person, the Mordecai.
और दूसरा व्यक्ति जो मोर्दकाई है, I want to compare him to the Holy Spirit. और उसकी हम तुलना पवित्र आत्मा के साथ करते हैं। Esther, a common person just like you and me. और एस्थर जो एक सामान्य लड़की थी, आपके और मेरे समान। And the fourth one, Haman, और चौथा व्यक्ति जो हामान है, the crooked plan, the plan of the devil through his life. और जो शैतानी चालें जो वो चलता है। You know, if you take a church, if you take a family, if you take any place that you are working as a child of God, और अगर आप देखते हैं आपके चर्च में या परिवार में या जिस भी स्थान में आप काम करते हैं, no, there is always God over your life. परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर रहता है And there is always Holy Spirit. और पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ होता है। And there is always devil behind you, try to destroy the plan of God in your life. और शैतान पीछे होता कि परमेश्वर का जो हमारे जीवन के लिए योजना है उसको वो नष्ट करें। But you and I as a common people, परंतु आप और मैं सामान्य व्यक्ति होकर भी God has a great plan for every one of us. परमेश्वर के लिए हम में से हरेक के लिए एक बड़ी योजना है। In the Gospel of John 16 verse 13 में, और यूहन्ना 16 अध्याय उसके 13 पद में it says the Holy Spirit will lead you into everything what is in the mind of God for now and also for the future. लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अभी के लिए और भविष्य के लिए पवित्र आत्मा उसको हमको लेकर चलेगा। Exactly the same way, the Mordecai was leading and guiding Esther. और इसी प्रकार से मोर्दकाई एस्थर को लीड कर रहा था। Esther, when she became a queen, she was so up in high places, she forgot and she was enjoying her life. लेकिन जब एस्थर जब रानी बन गई, जब ऊंचे पद पर पहुंच गई, तो वो भूल गई और अपनी जीवन को एंजॉय करने लगी। Many a times we may be in difficult situation or we may be in a very peaceful place. कई बार हम लोग मुसीबत के स्थान में होंगे या हम लोग एक बहुत स्टेबल पीसफुल जगह में होंगे। We always focus upon our life and we forget everything around us. हम अपने जीवन पर फोकस करते हैं और बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। And exactly the same way Esther was doing. और इसी प्रकार से एस्थर भी कर रही थी। Mordecai, her uncle, reminded her, लेकिन मोर्दकाई जो उसका चाचा था उसको याद दिलाया। he told her, you have come to this place and position for such a time as this because your people are in problem and troublesome situation. लेकिन मोर्दकाई ने बोला कि क्या पता कि तुझे ऐसे समय के लिए यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि तेरी जो प्रजा है, तेरी जो जाति है वो मुसीबत में है। And Mordecai was leading her life and warning her and rebuking her. और मोर्दकाई उसकी अगुवाई कर रहा था और उसको गाइड कर रहा था और उसको डांट रहा था। There are times when somebody rebukes us and warns us, we can heed to their voice and take a precaution what we need to do, or we can neglect and ignore and invite more problem into our life. हमारे जीवन में भी हमको चेतावनी मिलती है या कोई हमें डांटता है और हम उसके स्वीकार करते हैं और सुधर जाते हैं, या हम चूज कर सकते हैं कि हम उसको अनसुनी करें और हमारे जीवन में और प्रॉब्लम्स आ जाए। But thank God, Esther, even though she was a very high in position, she was a queen of the palace, she heeded to the voice of her uncle. एस्थर वो रानी थी और बड़े ऊंचे ओहदे पे थी, लेकिन उसने अपने चाचा की बात मानी। Because she was listening to her uncle, that's why she was a queen in the palace. और क्योंकि उसने अपने चाचा की बात मानी, वो राजमहल में एक रानी बनी।
and she was humble enough to listen to him again. और वो इतनी दीन थी कि उसने उनकी बात फिर से सुनी। Because in the Bible it says, if you are in the fear of God and you are humble, you will be rich and you will be honored by God. और बाइबल कहती है कि अगर आप परमेश्वर के भय में चलते हैं और दीन हो और नम्र हो तो आप धनवान बनेंगे। And the Lord wants us to fear him and listen to him. परमेश्वर चाहता कि हम उसका भय माने और उसकी सुने। And Esther was a common person just like you and me, but she heeded to the voice of the Holy Spirit that came through Mordecai. एस्थर एक सामान्य लड़की थी, आपके और मेरे समान, लेकिन उसने पवित्र आत्मा की आवाज जो मोर्दकै के द्वारा उस तक पहुंचती थी उसको सुना। Because she heeded to the voice of God, और क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसको माना, and she was able to come before the Lord. वो परमेश्वर के सामने आ सकी। You know, even though we are common people in the natural world, और हो सकता संसार में हम सामान्य लोग हों, but in the Bible, in 1 Peter chapter 2, verse 9, it says, you are a royal priesthood, a holy nation, a separated people unto the kingdom of God. और बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस 2:9 में लिखा है कि आप एक राजपदधारी, रॉयल प्रीस्टहुड, होली नेशन, एक पवित्र प्रजा परमेश्वर के लिए है। You are a royal priesthood. और आप राजपदधारी याजकों का समाज है। You may be in a palace, you may not be in a palace. आप महल में रह सकते हो, आप महल में नहीं रह सकते हो। But when you become the child of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की संतान बनते हैं, you become the child of the Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान बनते हैं। We become the royal people. हम रॉयल, हम लोग राजा के वंश के हो जाते हैं। Amen. Hallelujah. When you believe God's word, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, when you begin to act upon it, और जब आप उस पर कार्य करते हैं, God will begin to show his word in your life. परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में प्रस्तुत करना शुरू करेगा। Because God is seated on heaven, he is the King of kings and the Lord of lords. परमेश्वर स्वर्ग में है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। But he is looking at you and he is looking at me. लेकिन वो आपको देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। He is expecting us to believe and act upon the word of God. और परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि हम विश्वास करें और उसके वचन पर चले। He doesn't want us to neglect his word. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके वचन को अनसुना करें। And he wants us to know that what we are positioned in the kingdom of God. और परमेश्वर चाहता कि हम जाने कि उसके राज्य में हमारा क्या स्थान है। See, in the book of Esther, और एस्थर की पुस्तक में Mordecai was in the outside the gate watching people coming and going. मोर्देकाई जो था वो महल के मुख्य द्वार के बाहर रहता था और वो लोगों को आता जाता देखता। Esther became a queen. She is inside the palace enjoying her life. और एस्थर जो है वो महल में है, वो रानी बन गई, उसकी जीवन अच्छा चल रहा है। But Mordecai is acting in Esther's life just like the Holy Spirit acts in our life. लेकिन मोर्देकाई जो है वो एस्थर के जीवन में पवित्र आत्मा का काम कर रहा, जो वो काम कर रहा जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। The Holy Spirit will always come and speak to our life what danger is going to happen, what danger is taking place around in and around our life. और पवित्र आत्मा हमको चेतावनी देगा कि हमारे जीवन में मुसीबत, कौन सी तकलीफ, कोई मुसीबत जो आ रही है जो हमारे आजू बाजू है। It can be like through
dreams and visions or through somebody, through pastors and leaders. और पवित्र आत्मा हमसे स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, लीडर्स के द्वारा हमसे बात करे। But when Esther became a queen of the kingdom, लेकिन जब एस्थर उस राज्य की रानी बनी, there was a man called Haman. हामान नाम एक व्यक्ति था। He had a plan to destroy the people of the Lord. और उसका ये योजना थी कि वो परमेश्वर के लोगों को नष्ट करे। When Mordecai heard about this, और जब मोर्दकै ने इस बात को सुना, he was helpless, वो कुछ नहीं कर सकता था, but he approached Esther. लेकिन उसने एस्थर तक बात पहुंचाई। He told her, your people are in danger situation. If you do not do something about it, the Lord can bring a help to them from somewhere else, but you and your father's house will be destroyed. और मोर्दकै ने उससे कहा कि अगर तू अपने लोगों की मदद नहीं करेगी, परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करेगा, लेकिन तू और तेरा पिता का घराना नष्ट हो जाएगा। See, you and I have become a child of God. We have given power and authority. We are royal people in the kingdom of God. और आप और मैं परमेश्वर की संतान है। हमको एक पोजीशन, एक स्थान मिला है। हम राजपदधारी याजकों का समाज है। हमें कुछ When the Holy Spirit comes and speaks to our life, और जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, we need to take action about it. हमको उसके बारे में कुछ कार्य करना है। Otherwise, there are people like Haman, maybe in our family, maybe in our church, maybe in the place wherever we are working in business or in some jobs that God has placed our life to. हो सकता है हमारे आजू बाजू, हमारे कार्यों के स्थान पे, हमारे फैमिली में, हमें परिवार में, हमारे चर्च में हामान जैसे लोग हों। But when the Holy Spirit will instigate you and speaks to you, bring things into your notice, और जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपको चीजें दिखाता है, आपको बातें बताता है, what do? आप क्या करते हैं? Because in the Bible, in 1 Peter 5:8 says, the devil is an adversary, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. और पहला पत्रस 5 में लिखा है कि जो शैतान है वो एक फाड़ खाने वाले सिंह के जैसा है, देखता है कि मैं किसको पकड़ूं, किसका नाश करूं। So Satan comes to steal, kill and destroy, but the Lord says, I have come to give you life and an abundant life. और शैतान जो है वो चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। And God wants us to enjoy his abundant life, even in spite of there are situation in the world speaks differently to our life. और परमेश्वर चाहता कि हम अपने जीवन को एंजॉय करें, बहुतायत से रहे। जिस हमारे आजू बाजू जो है, हमारा जो सिचुएशन है, हमारी परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन परमेश्वर चाहता हम एक बहुतायत का जीवन जिए। There was exactly situation even around Esther's life. और एस्थर के जीवन में भी ऐसे ही विपरीत परिस्थितियां थी। Because Haman was planning to destroy all the people of Esther. और हामान जो था एस्थर और उसकी प्रजा, उसके लोगों को नष्ट करने की योजना बना रहा था। But Esther said, I cannot go before king unless he calls me. I don't know what to do. I cannot do this anything about it. लेकिन एस्थर ने कहा, मैं नहीं जानती मैं इसके बारे में क्या करूं, मैं राजा के सामने नहीं जा सकती जब तक वह मुझे न बुलाए, मैं क्या कर सकती हूँ। But when Mordecai challenges her, लेकिन जब मोर्दकै ने उसको चैलेंज किया, you know what she did? आपको पता उसने क्या किया? She went before the Lord in fasting and praying. परमेश्वर के सामने गई, उसने प्रार्थना की, उसने उपवास किया। She took her people who were around her and she began to fast before God. और उसने अपने साथ वाले लोगों को लिया और परमेश्वर के सामने बैठकर वो प्रार्थना करती रही और उपवास करके साथ प्रार्थना करी। But there is something wonderful also takes place. और एक बहुत कुछ अद्भुत होने लगता है।
when Esther was fasting with her people in the palace, और जब एस्थर अपने लोगों के साथ उपवास और प्रार्थना में थी, Mordecai also began to fast with the people around him in the outside. और मोर्दकाई जो है वो भी अपने लोगों के साथ महल के बाहर में उपवास और प्रार्थना करने लगा। When the Holy Spirit tells you and brings something into your notification that what you need to do about it, तो पवित्र आत्मा आपको बताता है, आपको दिखाता है कि क्या परिस्थिति और आपको इसके बारे में क्या करना है। Holy Spirit will not just tell you and disappear, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि आपको बताएगा और गायब हो जाएगा, but he will also join with you and he will also begin to pray before the Lord. In Romans chapter 8:26 it says, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for what as we ought, but the Spirit himself make intercession for us with groaning which cannot be uttered. और रोमियो 8 पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना करता है, जैसे रोमियो 8:26 में लिखा है कि पवित्र आत्मा भी हमारे साथ प्रार्थना करता है हमारी निर्बलताओं में, और आए भर भर कर और रो रो कर हमारे साथ प्रार्थना करता है। Holy Spirit will tell you what to do. पवित्र आत्मा आपको बताएगा क्या करना है, He will guide you और आपका मार्गदर्शन करेगा, and he will join with you when you cooperate with the Holy Spirit for the situation that is going to be such a destruction, but the Holy Spirit with you will become the source of strength from God and you will be able to have victory over your situation. और पवित्र आत्मा भी आपके साथ जुड़ जाएगा और जो आपकी परिस्थितियां हैं उसके साथ उस समय भी पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में विजय ले आएगा। Holy Spirit will not only inform you, but he will help you to pray in the groaning that he cannot be uttered. और पवित्र आत्मा जो है वो आपको सिर्फ बता के गायब नहीं होगा, वो आपको मदद करेगा, आपको बताएगा आपको क्या करना है और आहें भर भर कर प्रार्थना करेगा। When you pray, beg your pardon? when you pray according to the situation, giving yourself to the Holy Spirit, और जब आप प्रार्थना करते हैं और परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थना करते हैं और अपने आप को पवित्र आत्मा को दे देते हैं। in the Gospel of Luke chapter 10, 18, 19, 20, Jesus has spoken something very, very powerful. और लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 18, 19 और 20 पद में यीशु मसीह ने एक बहुत सामर्थ्य चीज कही है। In verse 18, Jesus said, I saw Satan fall like a lightning from heaven. और 18 पद में लिखा है, यीशु ने कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। Not over one situation, not over some few situation, but over every situation of our life that as we walk with God. एक परिस्थिति नहीं, कुछ परिस्थिति नहीं, लेकिन हर एक परिस्थिति हमारे जीवन में है जब हम चलते हैं। The Satan has fallen from that situation and he cannot win over our life. शैतान जो है उस परिस्थिति से ऑलरेडी गिरा हुआ है और वो हमारे जीवन के ऊपर विजयी नहीं हो सकता है। And Jesus himself has spoken to us. और यीशु मसीह ने हमें खुद कहा है। In verse 19 he says, behold, I give you the power and authority to trample the serpents and scorpions over all the powers of the enemy. Nothing shall by any means hurt you. और 19 पद में लिखा है लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। And Jesus says, nevertheless, do not rejoice over this, but the spirit are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. और 20 में कहता है, तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। Hallelujah. Hallelujah. And Jesus said, any situation, it could be your marriage problem, maybe your children's problem, maybe financial problem, maybe problem in the place where you are working, maybe something that you cannot talk to anybody.
but you can join with Holy Spirit, begin to pray and begin to be cooperating with Holy Spirit, because you have the victory over your situation already, because that's what Jesus said. और ये आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आपके घर में, आपके शादीशुदा जीवन में, आपके बच्चों की समस्या, या ये जिस जगह आप काम करते हैं कुछ समस्या हो, जो भी समस्या परिस्थिति के थ्रू आप जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाइए, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में विजय मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि शैतान हारा हुआ है। Amen. Hallelujah. And Jesus says, यीशु मसीह ने कहा, Satan's state, the state of his life is already declared. और शैतान की जो स्थिति है वो घोषित कर दी चुकी है, Because he's already fallen. क्योंकि वो पहले से गिरा हुआ है। And Jesus' second point, he says, I have given you the power and authority. और यीशु मसीह ने दूसरे पॉइंट में कहा कि मैंने तुमको सामर्थ और अधिकार दिया है। You feel great about it and make God great about every situation. और आप इसके बारे में अपने आप को आप ग्रेट समझिए और परमेश्वर को और महान समझिए, Because our names are written in heaven. क्योंकि हमारे नाम जो है वो स्वर्ग पर लिखे हैं। What does that mean? और इसका क्या मतलब है? We are the children of the Most High God. हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। When you are a child to somebody, or when you have a children, जब आप किसी के संतान हो या आपके खुद बच्चे हो, we never want to see them harmed and sad in situation. और हम नहीं चाहते उनको कभी किसी प्रकार की दुख वैसे होके जाए या किसी प्रकार की इंजरी उनको हो। We want to go out and help them to bring them out of the difficult situation. हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जाएं और उनको उनकी समस्याओं से बाहर निकालें। The same way, exactly, जिस प्रकार God also wants to give us victory and help us in every situation. परमेश्वर भी हमको विजय देना चाहता है और हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हमें मदद करना चाहता है। But God cannot come and do it for us. लेकिन परमेश्वर हमारे लिए आके ये कार्य नहीं कर सकता। He's already done it for us. उसने हमारे लिए पहले से ही कर चुका है। And that is why he says, I have given you the power and authority. और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको सामर्थ और अधिकार दिया है। Now what God is doing then? तो परमेश्वर क्या कर रहा है? In Psalms 11:4 it says, the Lord is in his holy temple, the Lord's throne is in heaven, his eyes behold and his eyelids test the sons of men. और भजन संहिता 11 और उसके चौथे पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती और उसकी पलकें उनको जांचती है। In Hebrews 4:16 it says, और इब्रानियों 4:16 में लिखा है, that therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। See, Esther was an ordinary girl who had no background how to live in the palace and how to come before king. और एस्थर जो थी वो सामान्य लड़की थी और उसको यह ज्ञान नहीं था कि उसका ये ना एक बैकग्राउंड था कि राजा के सामने कैसे आना है और महल में कैसे रहना है। But how did she do this? फिर उसने ये कैसे किया? Through the help of Mordecai. It was just like a help of the Holy Spirit. और मोर्दकै की मदद के द्वारा जैसे पवित्र आत्मा मदद करता है। She listened to him, she took the direction from him, and they came together and prayed together. और उसने उसकी सुनी
और उसके मार्गदर्शन को ग्रहण किया और दोनों साथ में आए और दोनों ने प्रार्थना की साथ में And they had a victory over their people in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में उन्हें विजय मिला उनके राज्य में उनको विजय प्राप्त हुआ Today we are in the kingdom of God, in the church of God, in the family of God. और आज हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की कलीसिया में है परमेश्वर के परिवार में है We have the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें मिला है The Holy Spirit will always prompt us and inspire us, lead us and guide us. Not only that, He will help us and join together to pray with us. और पवित्र आत्मा हमको लीड करता हमारा मार्गदर्शन करता पवित्र आत्मा हमारी मदद करता और पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारी मदद करता और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करता है When Esther and Mordecai came together and began to seek the face of God, और जब एस्थर और मोर्देकाई साथ में परमेश्वर के मुख को खोजने लगे the plan of the devil that came through Haman was completely destroyed. जो हामान की जो योजना थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई How did that happen? ये कैसे हुआ A common person just like Esther, और एक सामान्य लड़की एस्थर के समान when she came to the kingdom, she became a queen. She became a powerful person in the kingdom. और जब वो इस राज्य में आई वो एक रानी बन गई वो एक सामर्थी व्यक्ति बन गई We were in a kingdom which was in darkness, but when we came to the kingdom of light and we joined with God, and when we joined with God, we have become a powerful people of God. जब हम अंधकार के राज्य में थे और जब परमेश्वर के राज्य में आए हम उजियाला हमने पाया और परमेश्वर के साथ अब हम भी सामर्थी लोग बन गए When we join with Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते हैं we become a powerful people. हम सामर्थी लोग बन जाते हैं And we will always have the favor of God upon our life. और परमेश्वर का अनुग्रह सदैव हमारे ऊपर होगा And everything that you put your hand into it, और आप जो भी कार्य करेंगे the Lord will bless it and He will give you success over that life. परमेश्वर उसको आशीषित करेगा और उसको सक्सेसफुल उसको प्रॉस्पर सक्सेसफुल करेगा And we will destroy the plan of the enemy in our family, in our marriage, in our children's, maybe in the ministry, maybe in the place wherever we are working. और शत्रु की सारी योजनाओं को हम नष्ट कर देंगे हमारे घर में हमारे परिवार में हमारे मिनिस्ट्री में हमारे कार्य के स्थानों पर And we will establish the kingdom of God wherever God has placed our life. और परमेश्वर ने हमको जहां भी रखा है हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने वाले होंगे Church, I want to encourage you. और कलीसिया आज मैं आपको प्रोत्साहन करना मांगती You are the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य हो The Lord is seated on the throne और परमेश्वर अपने सिंहासन पर है and He wants you and me to join with the Holy Spirit. और वो चाहता है कि आप और मैं पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएं Fight our battles on our knees and praying before God. और हमारे संघर्षों को अपने घुटनों पर लड़ें पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर हम प्रार्थना करें And victory is for sure because Jesus already said, Satan has fallen down on the earth. और विजय जो है वो हमारी निश्चित है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि शैतान जो है वो धरती पर गिराया गया है And you have given power and authority. I have been given power and authority. और आपको और मुझे ये सामर्थ और ये अधिकार मिला है Our names are written in heaven. और हमारे नाम जो है वो स्वर्ग में लिखे गए We are victorious people. We are going to conquer in everything the Lord has called us on the earth. हम
विजयी लोग हैं, हम जयवंत लोग हैं और परमेश्वर ने जो कुछ रखा है हम उस पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। I don't know what is your situation right now, मैं नहीं जानती कि आपकी आज क्या परिस्थिति है, but the Lord says, my daughter and my son, do not fear, लेकिन परमेश्वर कहता मेरे पुत्र मेरी बेटी डर मत, because I want to give you victory. I'm already given into your life. मैं तुमको विजय देना चाहता हूँ, मैं दे चुका हूँ आपके जीवन में, You only have to exercise your authority और आपको अपने अपने अधिकार को कार्य करना है and speak over your situation until it takes place. और आपके परिस्थिति पर इसको घोषणा करना है जब तक ये नहीं हो जाता, Because you are a victorious people. I am a victorious person. क्योंकि आप जयवंत लोग हैं, मैं एक विजयी एक जयवंत व्यक्ति हूँ। Believe in God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें Follow the leading of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की अगुवाई को Join with Holy Spirit पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएं and He will give you victory. और वो आपको विजय देगा And you will see that in the natural. और आप उसको सांसारिक क्या जीवन में देखोगे And you will begin to experience victorious life in your own life in the natural. और आप ये विजय को अपने जीवन में रोज बरोज जीवन में आप इसको देखने पाओगे। Lord, tonight I want to take this 1 or 2 minutes of privilege to pray for everyone over there. परमेश्वर पिता मैं 1-2 मिनट लूंगी और हर एक जन जो यहाँ है उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। Touch that family, in a particular family. एक परिवार को तो छू ले परमेश्वर। There is so much of darkness, there is so much of sadness. I just rebuke that in Jesus' name. और जो दुख है और जो अंधकार है उसको यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ। I speak the light of God to drive away every darkness. और मैं परमेश्वर के उजियाले को बोलती हूँ और सारे अंधकार को यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ। Let the mind of that brother be enlightened by the touch of the Holy Spirit tonight. और उस भाई के मन को नए हो जाए, पवित्र आत्मा तू उनके मन को छू। Sister, the Lord says you have struggled enough and I'm going to take care of your battle and I'm going to give you victory in the name of Jesus. और बहन पवित्र आत्मा कहता कि आपने बहुत संघर्ष किया और अब मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा और आपको जयवंत जीवन दूंगा। May the peace of God begin to surround your home, surround your family and fill you with His grace. और परमेश्वर की शांति आपको और आपके घर को और आपके परिवार को भरपूर कर सके। I pray, Lord, that young man who is there, let him be touched by the Lord and be guided by the Lord. और मैं प्रार्थना करती कि जवान भाई जो है वो पवित्र आत्मा उनको छुए और पवित्र आत्मा उनको मार्गदर्शन करे। Let every confusion be taken away. Let the Lord's clear direction come to that brother in the name of Jesus. और हर एक प्रकार की कंफ्यूजन दूर हो जाए और परमेश्वर की मार्गदर्शन उनको मिले। Lord, I pray your Holy Spirit be poured upon every one of us tonight, everyone who is there online. May the Spirit of God begin to lead and guide and lead them into very victorious life that you have planned and purposed in 2021, oh Father. परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा हर एक जन के ऊपर उतरे, यहाँ जितने लोग सुनते हैं ऑनलाइन उनके ऊपर हो और इस साल 2021 में इनका मार्गदर्शन करे, उनकी अगुवाई करे। Let the pastor be greatly blessed. Increase of God will come over this pastor, this man of God, and the Lord will begin to intervene in your life. The Lord will begin to open doors for you in the name of Jesus. पास्टर जो है उनके लिए बहुत आयत का जीवन हो और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको अबंडेंस और बढ़ोतरी देगा। May the Lord have seen your patience, your long suffering. The Lord will go before you and make the crooked path straight for you.
और परमेश्वर ने आपके धीरज को देखा है और आपके संयम को देखा है और आपको ब्लेस करेगा। The Lord will go before you. परमेश्वर आपके सामने चलेगा। He will make your crooked path straight. वो आपके टेढ़े रास्तों को सीधा करेगा। I see the Lord lifting your head high up in every situation from now on. और मैं देखती हूँ कि परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा। हर एक परिस्थिति में आपके सिर को परमेश्वर ऊंचा करेगा आज से। Lord, touch every family they are here, oh Father. परमेश्वर पिता हर एक परिवार जो यहाँ है उनको तू छू ले। I bless you and I give you glory for this wonderful opportunity that we could meditate upon your word. And I give you all the glory in Jesus' name. और परमेश्वर तुझको धन्य कहते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। Amen. Amen. आमीन। Sister, thank you so much. Pastor, thank you very, very much. Thank you, Thank sister. Thank you Yeah. so much. Thank you, Esther and Sister Anthony. Thank you, आपको भी. Now I will invite Mr. Manish to say some word. Good evening, praise the Lord. First of all, I would like to say thank you to Pastor Sinchana Anthony. We would like to give thanks on behalf of Bridge Ministry. Thank you very much for your valuable time, for your patience, for your giving word of God, for this wonderful testimony you have shared with us. This was really touching, and we come to know that in your young age you have suffered a lot, and see the God has done beautiful work in your life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this work in your life. जैसा बाइबल में लिखा है कि माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, बट यीशु मसीह हमको कभी नहीं भूलेगा। वो हमेशा हमें संभालेगा और हमें ऊंचे स्थानों में बैठाएगा, as it is happened in Pastor Sinchana's life. So we must give first preference to our God for his words. And once again, we would like to say thank you to you, and may God bless you, your family, and your work, and may God's favor be upon you and on your family. Thank you so very much. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye. Praise the Bye-bye. Lord. Praise the Thank Lord. you. Thank you so much. Thank you everyone. जो लोग ज्वाइन हुए, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोग ने समय निकाला, और परमेश्वर की योजना होगी तो हम फिर से सिस्टर के साथ जुड़ेंगे और एक नए प्रकाशन के साथ, एक नए वचनों के साथ हम उनसे जुड़ेंगे। और फिर भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोग बहुत आशीषित हुए हैं आज के वचनों से, और आगे हम फिर आपसे वर्चुअल माध्यम से जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। Good night.